Namaste, myself Dr. K.K. Chaudhary, Faculty of Education and Methodology, Jyoti Vidyapeeth Wogan University, Jaipur, teaching subject Animal Diversity, and now we will discuss about the structure, classification and type of the corals. A coral reef is composed of calcium carbonate or limestone. कोरल रीफ कैल्शियम कार्बोनेट और लाइमस्टोन की बनी होती है. दिस इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द वाटर बाय कॉलोनी ऑफ कोरल पॉलिप्स एंड कोरेलाइन एल्गी. ये कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ से एब्जॉर्ब होता है? कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? कोरल पॉलिप्स और कोरेलाइन एल्गी. मोस्ट ऑफ द अंडरलाइंग फाउंडेशन ऑफ द रीफ इज डेड, मेड अप ऑफ लेयर अपॉन लेयर ऑफ कोरल स्केलेटन. कि जो अंडरलाइंग फाउंडेशन है रीफ का वो क्या है? डेड होता है, क्योंकि एक लेयर स्केलेटन की, फिर उसके ऊपर ग्रो करके, फिर उसकी डेथ, फिर उसके ऊपर ऐसे ग्रो करता रहता है. द लिविंग रीफ इज बिल्ड ओवर द टॉप ऑफ दिस. जो लिविंग रीफ है वो टॉप पे मिलेंगे बाई टाइनी कोरल पॉलिप्स एडिंग न्यू लाइमस्टोन टू मैसिव वेव स्ट्रक्चर्स. Polyp makes skeleton of calcium carbonate around themselves. Beautiful color of corals come from the colorful tentacle of the coral polyps and zooxanthellae algae that live in the tissue of many species. ठीक है. Classification: though a coral polyp look like a plant, it is really an animal, or rather a colony of animal, and is classified into the phylum Cnidaria. Phylum Cnidaria is further subdivided into three classes: jellyfish, हाइड्रोजोआ यानी कि स्काइफोजोआ, हाइड्रोजोआ एंड कोरल एंड द सी एनिमल्स द एंथोजोआ. Corals are an ancient group having simple radially symmetrical body with a single opening that serve as both mouth and the anus. Body is made up of two layers of the cells separated by jelly-like layer with no internal organ. Coral possess specialized stinging cells called nematocysts on their retractable tentacles that are used to catch the food. I have already discussed you with the general characteristics of the coelenterate. अब है type of the corals. There is multitude of different kind of coral on the Great Barrier Reef, including 100 of the species of both hexacoral, hard coral and octocoral, sea pen, blue coral, soft corals and sea fans. Hard corals can be further separated into the two groups. Hard corals में दो ग्रुप हैं. zooxanthellae जिनको रीफ बिल्डिंग बोलते हैं, corals are one that depend on the zooxanthellae algae के ऊपर जो डिपेंड है न्यूट्रिएंट्स के लिए. एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है. These shallow water corals have a major reef building function. They are generally found in clear water less than 50 meter deep, as the algae need light for the photosynthesis. कि जो हार्ड कोरल्स हैं वो दो ग्रुप, जूजेंथेलेट कोरल्स जो जूजेंथेले एल्गी के साथ के ऊपर डिपेंड है, समझे, जो जूजेंथेली एल्गी के ऊपर डिपेंड है. किसके लिए? न्यूट्रिएंट्स के लिए. तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है. तो ये शैलो वाटर में होंगी 50 मीटर डीप तक, क्योंकि एल्गी को तो फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की ज़रूरत होती है. सेकेंड आप देखिएगा ए जूजेंथेलिट. कोरल डू नॉट कंटेन जूजेंथेली एंड देयरफॉर गेन देयर न्यूट्रिएंट्स सोलली फ्रॉम फिल्टरिंग प्लैंकटन फ्रॉम द सी वाटर. ये जूजेंथेली ए लगा, ए जून विदाउट जूजेंथेलेट एल्गी के, तो ये अपना खाना फिल्ट्रेशन से अपने आप ही बनाती हैं. दीज आइसोलेटेड सोलिटरी या कॉलोनियल फॉर्म रेयरली बिल्ड बिग कंस्ट्रक्शन एंड मैनी ऑफ दीज कोरल स्पीसीज आर प्रेजेंट इन नॉन रीफ इन्वायरमेंट इन कोस्टल एरिया, मोरेटन बे ऑफ क्वींसलैंड. तो ये ज़्यादा बड़ी कोरल्स नहीं बना पाती, ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बना पाती. Depending on their location, coral give rise to various formation. इस तरह फ्रिंजिंग रीफ्स,
You can see into the diagram barrier reefs or atolls. Fringing reef, it is a coral platform attached to a continental coast and island, sometimes separated by narrow shallow lagoon or channel. Fringing reef run as a narrow belt 0.5 km to 2.5 km wide. This type of reef grow from the deep sea bottom with the seaward side sloping steeply into the deep sea. Coral polyps do not extend themselves outward because of sudden and large increase in the depth. So the surface of fringing reef is rough and is covered with coral remains, forming a builder zone or reef flat. Fringing reef can be seen at the New Heaviside Society island of Australia and off the southern coast of Florida पे मिल जाएंगे आपको fringing reefs. Barrier reef, this is the largest of the three reefs. आप डायग्राम में भी देख सकते हैं. Run for 100 of kilometer and is several kilometer wide. It extend as a broken irregular ring around the coast या island के चारों तरफ एक ring almost parallel to बना लेते हैं. Barrier reef is characterized by distant location of the reef from the coast with a broader and deeper lagoon, which is sometimes joined with the sea water through one or more channel cutting across the barrier reefs. तो barrier reef क्या है? The barrier reef is very thick, going even below 180 meter से भी नीचे, with seaward side sloping steeply into the deep sea. Surface of a barrier reef is covered with coral debris, boulders and the sand. The most famous example of this type of reef is Great Barrier Reef of the coast of Northeast Australia, which is 1900 km long and 160 km wide. Third है atoll. It is a ring-like reef which partly or completely enclose a lagoon. Lagoon may have a level surface, but the seaward side of the reef slopes steeply into the deep sea. Lagoon has a depth of 80 to 150 meter and may be joined with the sea water through a number of channels cutting across the reef. Atolls are located at great distance from deep sea platform, where the submarine features may help in formation of atoll, such as submerged island or volcanic cones may reach a level suitable for coral growth. A atoll may have one of the following three forms: true atoll, circular reef enclosing a lagoon with no island, an atoll surrounding a lagoon with an island. Third, a coral island or atoll island, which is in fact an atoll reef built by process of erosion and deposition of waves with islands crown formed around them. Atolls are far more common in Pacific than any other ocean. The Fiji Atoll and the Funafuti Atolls in the Ellic Island are well-known examples of the atolls. Large number of atolls also occur in the Lakshadweep Island. So this is all about the structure and type of the coral reefs. थ्री टाइप्स आपको बताई गई हैं कि भाई फ्रिंजिंग रीफ्स, बैरियर रीफ्स और एटोल्स तीनों कैसे बनती हैं, टाइप कोरल्स की, जूजेंथिलेट, ए जूजेंथिलेट्स दोनों बताई हैं, हार्ड कोरल्स के भी दो ग्रुप हैं, क्लासिफिकेशन आपको बता दी, कोरल्स के स्ट्रक्चर बता दिए. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द structure, type of the corals. Hope you understand the topic. If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it. Thank you. This session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women University, Jaipur. Thank you very much.